you all on behalf of Ambedkar Society for South Asia. Today, we have organized an international webinar to commemorate the death anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. The date of death of this amazing and struggling person is the 6th of December 1956. We'll discuss his struggles and hard work and also the results and outcomes of his efforts at the global level. The topic of today's webinar is Dr. Ambedkar as a thinker beyond borders, global influence of his philosophy. The purpose behind organizing this webinar is to highlight the importance of continuous efforts to achieve a life goal. We'll also try to unfold the strategies of achievements of Dr. B.R. Ambedkar in terms of the long-term change in the mindset of society. So we have a distinguished guest with us. Let me introduce. First of all, we have Dr. Devi. She has joined us from India. She is Assistant Professor, Department of Social Work, Delhi University, India. Thank you so much, ma'am, for joining. Next, we have Dr. Rajesh Kumar. He has joined us from India. He is Associate Professor of English, Indra Gandhi University, Open University, India. Thank you so much, sir, for joining. Thank you so much. Next, we have Dr. Hemangi Kadlak. She is also from India. She is Social Reconstruction Scientist and Assistant Professor at Symbiosis International University, India. She is a writer and a public speaker as well. She has written and published widely on sanitation workers' community issues, the youth of sanitation workers, and she is also an advisory committee member for the Project on Sanitation Workers. She runs a YouTube channel named Dr. Hemangi Kadlak. The topics on YouTube are the financial independence of women, education, health, and sanitation work. Thank you so much, ma'am, for your precious time. Next, we have Mr. Umar Javed, last but not the least. He is from Pakistan. He is an analyst, a researcher, and a journalist. Thank you, sir, for joining and your precious time. Thank you. Thank you. So starting from Dr. Hemangi Kadlak. Ma'am, I repeat the topic. Today's webinar is on Dr. Ambedkar as a thinker beyond borders, global influence of his philosophy. So what would you like to say on this topic? Okay. Yeah, thank you so much for your introduction about me. Okay, so I will start my topic. Here I wrote some of the points which I will narrate here in front of you. Javed, everyone. I extend my heartfelt gratitude to the Ambedkar Society for South Asia and Gina Ambedkar Chair, Center for South Asian Studies, for providing me with the platform to pay a humanitarian tribute to Dr. B.R. Ambedkar, the great son of India. I feel privileged to share my thought on his 68th death anniversary, which we observe as a sad day. Over the years, I have spoken on various occasions about Baba Sahib, touching upon diverse topics. However, today's discussion holds a special place for me. The reason is my current role as an assistant professor at the Dr. Ambedkar Chair at Symbiosis International Deemed University, Pune. This chair focuses on Dr. Ambedkar's thought and contribution to education in India. Being affiliated with the Dr. Ambedkar Chair makes me a more responsible for conveying the right message to society with clarity and purpose. The theme of today's discussion is Dr. Ambedkar as a thinker beyond borders, global influence of his philosophy. I recall delivering a related webinar in 2022 on what Dr. Ambedkar means to me and how I see him from a global perspective on the occasion of his birth anniversary at Columbia University, USA. That speech can be found online and published by Roundtable India, and it emphasizes different aspects compared to today's topic. So that topic where I covered some of the point in the previous discussion, that was also on the global kind of thinkers and the same line. But today's point
is something different what I talked in the 2022. We all know that Dr. Ambedkar's global recognition is a testament to his unparalleled intellect and exceptional education at prestigious universities worldwide. He valued and pursued higher education when education was inaccessible to many in India, particularly to those from marginalized communities. We learn about him through stories, informal discussions at home, literature on social movements, films, television series, social gatherings, public talks, and now via social media. We all familiar with his educational journey, personal struggle to look after his family, and battle for larger humanity, for the reclamation of human personality. While his social struggles includes caste issues, women rights, labor rights, but the core struggle was protecting human values. When discussing human values, it always transcends the boundaries of caste, religion, gender, and nationality. We see Dr. Ambedkar's statues, witness celebrations of his birth anniversaries, and commemorations of his death across various universities and social events around the world. His writings are being studied in institutions like Columbia University, and numerous anti-caste laws have been enacted in different countries. These efforts aim to uphold human values globally. Dr. Ambedkar serves as a catalyst for international collaboration and the sharing of knowledge and resources. Dr. Ambedkar was profoundly influenced by remarkable mentors during his academic journey: John W. Seligman, James Shotwell, James Hadley. While in America, he witnessed the harsh realities of anti-Black racism. Notably, correspondence exists between Dupuis' papers. The renowned African-American intellectual and activist archived at the University of Massachusetts. In the 1940s, Dr. Ambedkar reached out to Dupuis regarding the National Negro Congress petition to the UN, which sought to secure minority rights through the UN Council. Dr. Ambedkar explained that he had been a student of the Negro problem and that there is so much similarity between the position of the untouchables in India and of the position of the Negroes in America, that the study of the latter is not only natural but necessary. In a letter dated 1946, Dupuis responded by telling Ambedkar he was familiar with his name and that he had every sympathy with the untouchables of India. Dr. Ambedkar facilitated an intellectual dialogue through his education in US and London, and even sometimes in Germany, and through his collaborations and interactions with global intellectuals, thinkers, activists who campaigned human values beyond borders to uphold human values crossing national boundaries. He recognized the need for a unified voice at the international level to alleviate the humiliation faced by marginalized groups in their respective nations. This realization led him to transform his spiritual journey from Hinduism to Buddhism, embracing its teaching and converting himself with his followers in India in 1956. This conversion gifted his followers a noble way of life that encouraged global engagement. Even the Indian Constitution reflects ideas of justice, liberty, equality, and fraternity, deeply influenced by these principles. Dr. Ambedkar incorporated into his framework. These historical connections underscore Baba Sahib's vision of equality and justice as universal principles. His philosophy continues to inspire efforts to protect and nurture human dignity across the globe. Let us honor his legacy by carrying forward his mission
for a more equitable and compassionate world. Thank you so much and Javed to all. Yes, I'm ending my talk here. Thank you so much, ma'am. Next, I would like to request Dr. Mali Devi. Ma'am, what would you like to say on the topic? Am I audible? Yes, you are audible. Yes. Thank you so much, the host, and also Dr. Hemangi for for the uh, very powerful introduction, I would say. And Dr. Bhimrao Ambedkar, he emerged as an pioneering intellectual of India when it was colonized, India when it became independent, and the post-independent journey of India through his ideas. So he is, as Dr. Hemangi pointed it out, he stood as an advocate for the marginalized communities, especially scheduled caste, and he mentioned and specifically mentioned weaker sections in the Constitution of India as well. So the global impact, we need to see his legacy beyond national boundaries because of his vision for justice and equality that resonates worldwide. So, the diverse set of expertise he had in various subject matters, whether it's economics, it is law, governance, social justice, social anthropology, sociology, in each of the fields he had some or another thing that he contributed, and that is why you'll see whole at university level there are various fields who are still referring to him, even for agriculture and the monetary or financial implication, everyone is referring to his writings and speeches in order to gain insights on how to work in the contemporary world. His intellectual foundation, we all are very clear about. What I would suggest, Ambedkar as a global intellectual, he emerged due to his intellectual engagement. He had addressed global audiences on universal principles of justice. That was the core of his philosophy, the philosophy of social justice, on which he engaged with international leaders and international movements. As Dr. Hemangi also pointed that he was very much in solidarity with anti-racist movements which were going on. His ideas were not limited to one particular section or one particular strata of the society. His ideas had universality. So what is universality? It simply means the vision of equality, the vision of justice, which is not limited to certain national boundaries. It is specifically useful for everyone who is fighting for social liberation. His ideas on scientific temperament. He said cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. Humans are mortal, so are the ideas. An idea needs propagation as much as a plant needs watering. Otherwise, both will die. So his significant emphasis on the ideas that we need to transmit as a progressive society to one another is of very much significance to the whole world. On his uh, political philosophy and how we can see a strategic shift out there. So he started with a dynamic approach. Firstly, by in his approach, he started working on Bahishkrit Hitkarni Sabha for the social welfare of the people who were from depressed classes. Gradually he shifted politically, okay, and he started working on independent labor party in 1930s in order to address the question of representation of weaker sections at political structures. Later on, when he saw that social and political were not being enough, we need a path of emancipation, we need a path towards salvation and freedom from the existing religion boundaries. So he shifted his focus towards embracing Buddhism as a path of emancipation. And he saw spiritual solution to the caste problem, turning to Buddhism as a means of salvation.
And in 1956, his conversion marked the quest that we all were looking for to offer us equal dignity as a human being. This strategic shift was not something random. This strategic shift meant that there were multiple avenues of emancipation that we all, as a global citizen, need to work on. And through this, he provided an optimistic lens and visionary leadership to the many issues which were going around the world. Then, if we will look towards his academic foundation, it's very interesting. He studied at Columbia and London School of Economics. He did his dissertation in Columbia on the evolution of provincial finance in India. And in London School of Economics, his work was on the problem of rupee, its origin and its solution. Both the theses were somehow a critique of existing British colonialism structure in India. So he was already having one critical outlook towards the existing social and political structure. That insight he gained from Edwin Seligman, who was his supervisor. And as Dr. Hemangi also pointed out, that he was under influence of John Dewey, whose ideas of social justice really inspired him. John Dewey's principle is society exists through a process of transmission, making possible the constant renewing of the social fabric. This principle, through this principle, he had gained this insight that education can be used as a tool of social transformation and is a tool of transmission of ideas of democracy, of equality and fraternity. And that is why his research is focused on financial and structure foundations of governance, but he simultaneously started advocating for representation and justice for all. So educational journey was really a preparation towards what we see as an outcome today as the Constitution of India, which has been the amalgamation of many, many other constitutions around the world. Now, one more significant factor that I observed throughout, learning from his speech writings, the films which were made on him, that his mobility, physical mobility beyond borders. He was not stagnated at one place in India. His physical mobility was all over the world. He was going all over the world, meeting the leaders, meeting the governors. He was meeting, he had joined Churchill, who talked about how 60 million depressed class people in India were suffering. So he was moving beyond borders in order to internationalize and in order to make the world aware of what is caste and how it was hampering the growth of a significant section of people in India. So Ambedkar was one of the most traveled Indian politicians of his time. He journeyed across countries through various modes of transport that provided him mobility and contributed in his intellectual and political development. His mobility allowed him to explore diverse political ideas, diverse perspectives, and broadened his horizons in order to develop the understanding about various issues of caste, governance, and also the social movements which were going around the world. He learned about racism when he went to London as an Indian student, and there he experienced the kind of racism which was there in accommodation and the segregation due to which he faced difficulties in getting affordable accommodation. There were high prices of accommodation. He was excluded from social spaces. All that racial segregation in Britain played a very crucial role in forming his sense of who he was as an Indian Dalit and who he was as an intellectual, emerging intellectual in the London academia. So Ambedkar's journey have helped him to cultivate a more flexible and a more in-depth intellectual mobility,
and allowed him to engage with multiple ideas and views about what is segregation when it comes to race, what is segregation when it comes to caste. So it developed his strong positions on social and political issues. And these were his lived experiences in as an Indian in Europe and as Dalit amongst Indians. So there were these two dual identities which he was experiencing when he was in London. His personal challenges like this fueled his advocacy for civil rights, equality, and social justice. So that is why we would say that London, in provided in that time and space, was the crucial space where he developed his ideas and activism. In London, as I said, he was being viewed as lowest of the low in India, but as an intellectual force in London. He used London as a strategic platform to secure rights for Dalits by talking about it, by having dialogues about it. It provided it a pivotal space for intellectual growth and political activism. Through London, he combined his insights from various, because at that point of time, he had various contemporaries who were, studying alienation, who were studying segregation from various perspectives like economics, sociology, law, and he also gained insight about those inequalities. If we would read Christopher Jeffrellet, he talks about how contemporaries of Ambedkar, his fellow mates, were studying about labor inequalities, class inequalities of the labor in China, or the inequalities faced by Black students in America. So all these contemporaries, because they were studying various sorts of inequalities, helped him to gain an understanding of how these inequalities are going to be addressed in his own country. And that is why it gave him a comprehensive framework for combating caste oppression in India. So we should view London's intellectual atmosphere as a platform where he advocated for rights of Dalits internationally. He explored global governance structures, various kinds of constitutions. He explored how there were newly formed independent states and what they were looking for, what kind of reforms they were looking for. And that understanding laid the foundation of India's constitution. So we could see his journey and role of London as a cosmopolitan state that shaped his ideas for, making of alternative framework for addressing caste. Gradually, we can see that there were roundtable conferences. So first roundtable conference, in first roundtable conference, he was able to meet many British political figures, and he was able to talk about caste related oppression and what was being faced by Dalit sections in India. In second roundtable conference, he had major political confrontation with Gandhi over Dalit voting rights. And there was the emergence of demand for separate electorates. Post roundtable conference, there was a visit to London where he met Winston Churchill, and he talked about global policy makers about India's independence, because at that point of time he was experiencing, as I said, his dual identity was making him experience what after independence, what is there for Dalit rights, what is there for weaker sections, are there any provisions, are those who are caste elites or those who are in power, political power, will they be able to address these issues? So he was discussing these issues and his fears about what is going to happen to Dalits after independence. So he was discussing these things at international level with Churchill, and Churchill also gave very good response to it, that India needs to address its weaker sections. It needs to address the rights of 60 million people which is at stake. So if they are offering independence, there should be something very concrete, I would say, concrete that could address their needs, their challenges, and their concerns, which were till now
were not even addressed by British colonial state in India. So this happened in if you'll see the conversation between Dubois and uh, uh, not conversation. There is a French philosopher Dubois, and he talks about he not talks about, he cites Ambedkar. He cites Ambedkar when he talks about Black rights and liberation movement. He says that Ambedkar, he is very much right when he says that even British colonial power structures were unable to address the issues of Dalits and caste in India. So he noted two kinds of movements going on simultaneously. He said when Ambedkar talks about Dalit rights, he's talking about freedom movement at two levels: freedom at individual level from caste, and freedom from collective level from the caste elites and their political structures. So this particular statement by Dubois, it addresses that conflict which individually and collectively Ambedkar was also facing and experiencing at that moment of independence. And this, there is one very interesting, this fear that I'm talking about, he addresses at South Borough Commission. In this particular recommendation to South Borough Commission, he submits the memorandum about his fears about Dalits being oppressed even after the independence. And that is why the colonial government at that point of time, they sent Simon Commission to India in order to have a look on the plight of Dalits, which was again opposed by the caste elites, and we all know about it. So when Ambedkar experienced the sense of freedom in 1947, it was a dual victory for all of us. First, he made sure that the individual rights of Dalits were saved, individual rights of weaker section minorities were saved through the Constitution of India, which strongly in its Article 46 says that it is the power of the state, it is the responsibility of the state, duty of the state to protect its weaker sections. So he was the one who made sure that even after he being not there physically, his ideas have made the survival of life and quality of life of Dalits and weaker sections better in India and also globally. So you would see there have been many instances where he expressed his solidarity with Black communities' liberation movement against structural forces of racism. Further, in Australia, in media, there is a strong movement right now for incorporating Ambedkar's philosophy in their policies, in their governance structures. So recently, Dr. Ajay Niranjane of Ambedkar International Mission said that he is seen as a Dalit leader, but his work on gender equality and social equity are equally significant. His works in the field of law, his speeches and writings prove that his vision is relevant to Australian multiculturalism in the light of Ambedkar's thoughts. In Australia, there are professors and academia who are significantly working in transmission of Dr. Ambedkar's philosophy. Professor Robin Jeffrey and Professor Peter Friedlander are actively working on this. His engagement with United Nations to highlight caste discrimination as a violation of human rights is known to all of us. His strategic negotiation as a diplomat gained him a global recognition throughout the world in order to, make sure that his ideas are incorporated in justice, equality, and governance. There is a strong influence of English as a language in his journey, and that got him connected to many countries and many political structures around the world. English as a language, through English as a language, he had a global outreach. He had global audiences. His works and speeches were being listened to
which were not, which was not the case earlier, because earlier English, as well as, as I said, traveling, being a traveler, both were limited towards the privileged sections like Gandhi, Nehru, Patel, everyone, those who had already a political lineage or legacy. But he was coming from a certain section, and going till there, where the he was challenging the ideas of already privileged leaders. So you can see his idea transcending all over the world. His role in implementation of India's Mandal Commission during 1980s is very crucial. Uh, it is due to his ideas that there are Ambedkarite 1950s. In 1950s, we can see there was a significant migration that happened from Indian scheduled caste in Europe. So there they got settled, and they started Ambedkarite and Buddhist foundations and associations. They promoted cultural projects to highlight the Ambedkar's legacy. And through those projects, we can see that at that moment, VP Singh, who worked on the implementation of Mandal Commission in India, we can see an impact of these particular organizations and their ideology on VP Singh's Mandal Commission. So his legacy and philosophy helped us in, current sustenance of rights of depressed classes, and that is why I feel that he should not be seen in the light of only limited to India. He has been a global social reformer, and his ideas and insights are still the need of those countries who are really working on their economic and political structures. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your input. Next, I would like to request Dr. Rajesh Kumar. So if we talk about international platforms like United Nations, so Dr. Ambedkar ka kya influence tha? What was the impact at international levels? Okay, thank you. Thank you so much. I hope I'm audible because we are having poor network, very poor network. I Yes, got you are connected also. clearly audible. Yeah, okay. So first of all, let me thank the organizer, okay, but particularly the Ambedkar Society for having given me this opportunity to say a few words. I think most of the topics on most of the issues have already been covered. I think Dr. Madi has spoken a lot on various issues also. However, I would like to, talk about few universal issues also. And let me congratulate also for the kind of topic which you have kept here. Like, okay, Ambedkar is a thinker beyond borders. I mean, it's a very philosophical, topic. I mean, which is very encouraging also, and global influence of his philosophy also. So when we look at, Dr. Ambedkar as a philosopher, and also as a thinker, let me tell you first of all, that he is, I would say, undoubtedly a liberator. He and his works have been compared with that of Martin Luther Jr. the King. He has been so popular, not only in India but abroad as well as that. His most of the writings are being considered as part of the syllabus of the universities also, where his works are being offered in the syllabus also. He has become so universal, liberator, you can say, emancipator also. There's so many people, at several places, okay, they have been doing a lot of research works also on Dr. Ambedkar. Now, when we talk about Dr. Ambedkar, as a philosopher also, let me tell you that undoubtedly he has been a great intellectual, okay. And he is, one of the greatest minds of the not only 20th century, 21st century, I would say 21st century, whose influence has never eclipsed, even after his death. And let me tell you that today also we pay tribute to him. We had a university function also in which we remembered him also. A lot of gathering was there. So we still remember him. And be it 6th December or be it 14th April, people do remember him. But I must say that people remember him because of his thoughts. His thoughts, intellectual thought, intellectual also kind of imaginations which he has been known for in terms all over the world. And he's still an inspiration, I would say, and also he is considered to be an innovator of many insightful thoughts also.
And he is considered as, I would say, intellectual treasures, okay, which he has possessed, throughout the life he lived here, okay. And when we look at his contribution, I would say contribution as a philosopher also, when we look at philosophy, his significant contributions, I would say, have been in terms of, his legacy towards four important ideals, okay. We consider him as the, constitution maker, constitution maker. And he the whole world remembers him for the for ideals which he has provided to the constitution, to the whole world. So not only India but the whole world. And where he's talking about, first of all, the first ideal is justice. Even Dr. Mali also talked about justice. What kind of justice? He's talking about social justice, he's talking about economic justice, he's talking about political justice. So these things have become universal. So when we talk him as a universal figure, as a thinker beyond borders, so we try to somehow, locate these ideals which he's talking about, okay, to the whole world. And we try to locate, justify whether, these ideals are still irrelevant or not. So I would say they are still relevant. That is why they remember, Dr. Ambedkar. So first ideal which he has contributed towards the whole world is justice. He has talked about justice. What kind of justice? Social justice, economic justice, political justice. And the second ideal which he's talked about is obviously liberty, liberty of thought, expression, belief, faith, worship. And thirdly, equality. Equality, what kind of equality? He has talked about status, equality of status, equality of opportunity, and finally, fraternity, which has been very, very important. And there has been, I would say, an argument that when he's talking about these four ideals, people say that, these are the three, slogans which were given in the French Revolution. But Dr. Ambedkar has himself, considered the fact that he draws all these ideals, okay, from the teachings of Lord Buddha. Lord Buddha was his guru, one of the gurus, I would say, okay. And and that is why, Dr. Ambedkar is known as, I would say, one of the greatest social democrats. He's the greatest social democrat and a revolutionary, who has ever lived on the in this world. Social democrat for all these four kind of, I would say, ideals which he has talked about. So his contribution, I would say, has not only been to the, India, particularly where he was born, but to the whole world itself, And remember, there has been one system which he has always fought against. That we know in India we talk about caste system, okay. In other places, we find some certain similarities, so racial in terms of racial relations, caste relations also. So we find the similarities, okay, happening in India as well. I remember writing a book also where I dealt with, divergences, convergences between racial relations and caste relations. So I have, worked on Dr. Ambedkar's writings also, his philosophy, his thoughts, okay, and somehow I found him very, very relevant, okay, and which are and a kind of issues which he has talked about, have become very, very universal. I would say they have become universal, and today, particularly, when we are living in the era of digital era, era of globalization on the one hand. On the other hand, if you look at the context, on the other hand, we have elitism existing on the other hand, and if you look at his contribution, his relentless revolt against this unjust system, whether be it in India in terms of caste system or be it in abroad in terms of racialism, he has always fought against this elitism, the kind of a system which has been operating, and these are the things which have become very universal. And it has become a great source of inspiration, not to only oppressed people, but the whole world, but the people of the, whole world itself, And there are, I would say, when you talk about kind of core concepts of like any governance, be it in India and abroad also. So see,
there are two core concepts which Ambedkar also has touched upon. I mean, and these two core concepts are, like, say, justice and truth, And I must tell you that the credit goes to Dr. Ambedkar, because it was he really who fought for justice and truth, and India particularly, he fought for the oppressed people, and he made people of the caste Hindus, aware of this fact, at least this fact that, we are okay doing some injustice to the people, So he, there has been, people have been really wondering if suppose he imagined if for a moment that what would happen, okay, if the like Dalit fate, if the Ambedkar was not born into this world, So his contribution has been, I would say, immense, absolutely immense, Okay. And apart from these four ideals like justice, liberty, equality, and fraternity, his contribution has also been, very, very significant towards other issues also. Let me tell you, for example, he has talked about human rights. Okay, human rights. So human rights are universal issues, and Ambedkar's ideas on human rights, okay, including the right to health, he's talked about that, right to education, very, very important one, equal treatment he has talked about, they are still relevant today, and he believed that the oppressed and exploited people, should be given should not only be given charity, but instead they should be given their own rights, they should not be begging for their rights, but they should be rightfully given what their rights are, it is he who really made oppressed people realize that, look, people, these are your rights, and these are, fundamental rights to which you are entitled for, So he made them realize. So when we talk about even his contribution going beyond borders, okay, so I was so human rights has been one of the issues which he has talked about, which he has touched upon, he has talked about, okay. The second, I would say, universal issue, which he has talked about and which he has dealt with, obviously, social democracy, And Dr. Ambedkar believed that, when you talk about political democracy, he doesn't talk only about political democracy, remember. But he instead focused that political democracy should be based on social democracy, social and also economic democracy. He talks about, okay, socially democracy, economic democracy, so there should be equality in the various realms of this existence. When we talk about various realms, so like social democracy, political democracy, economic democracy, okay, which really recognizes all the four ideals, okay, justice, liberty, equality, and fraternity. These are the principles of life, which should be achieved, you can say, by the people. And the third most important, I would say, the universal topic which he has talked upon, because of which he is relevant, is obviously he talks at length about education. He considers education as a vehicle to achieve the four ideals which he has talked about. Okay, liberty, equality, fraternity, and justice. And he has really sensitized the people. Today, Dalits, they are, fighting for their rights. Why are they doing that? Because they got inspired by Dr. Ambedkar's philosophy, Dr. Ambedkar's teachings, and starting from, you can say, Maratha, Ambedkar, you can say, writers, and today people talk about Ambedkarism, Ambedkarism. So his ideas, his premises, his epistemological thoughts have really, sensitized people. So it is only because of Ambedkar. Ambedkar said education is the only vehicle to achieve these four ideals, to achieve your rights. And Dalit people, if you feel that you are oppressed, you must fight for your rights, So therefore, education becomes very, very essential for all of us if we want ourselves to be freed, When he's talking about self-emancipation also, we should be free, okay. Then he also simultaneously talks about idealistic democracy. And I think Dr. Mali also talked about Devi's concept of idealistic democracy. Okay, so she mentioned about his teacher, and he was very much influenced by Devi's concept of idealistic democracy to help. Is the tradition of
I mean, the oppressed people, okay, how they were oppressed, how they should be, sensitized, how they should fight against all these ideals, for ideals which they have been, bereaved of, and deprived of, So therefore, looking at all these ideas, issues together, I consider him as a great intellectual for the kind of forms of thoughts he really disseminated among the people, epistemological thoughts which he was possessing, which he disseminated among the people. So he is considered as a liberator, as an emancipator, I would say, okay. And finally, let me tell you that he made people realize, realize about the fact that you have got to understand that there has been a powerful regulatory mechanism or conceptual machinery through which the elite class, or can say oppressors, they have been oppressing the oppressed people. That you have to understand. For example, let me give an instance of Indian context. In India, he said that Manusmriti, when it is being considered as a Dharma Grantha, it is a conceptual machinery which has, whose ideas have been incorporated in terms of the Dharma Grantha. And this is considered as, Dharma Grantha disseminated in the society as being the only, something which is being given by God. This was disseminated among the people, conceptual machinery. But Dr. Ambedkar, what he is arguing, contending, is the fact that, look, people, you have to understand that this is something which has been given by men in the world. If you talk about various kinds of discrimination, these discriminations are artificial discriminations, okay? They are not God-given. You have to understand, these are social constructs people have considered here, okay, in India. When you talk about, say, for example, gender discrimination, okay, caste discrimination, racial discrimination, rich and poor, all these various kinds of discriminations, all these can be called what even Rousseau says, artificial inequalities, artificially. In his book, you can say, okay, when he's talking about, inequality, okay, a discourse on inequality, Rousseau wrote that book, he's arguing about the fact that all these various kinds of discrimination which we are having in this world, they are artificial inequalities, okay? They are not created by gods. When a girl is saying, you are a woman, you must behave like a woman. So there is otherization which is taking place here. So this otherization is taking place. Why? Because there is again binary opposition. Binary means on the one hand we have oppressor who is oppressing through system, okay. In caste system we have this varnashram system which was given from above, racialism, okay. When you look at racialism, so Dr. Ambedkar does talk about all these things, okay. Who were the Chudras? In that book also, Dr. Ambedkar is talking about how a person is being considered as the other. So otherization, alterity, we talk about alterity, otherization. So this takes place only because of the fact that there is a conceptual machinery which is used as a powerful regulatory mechanism to have control over the society and disseminate that system into the world as being the normal. So caste system, for example, has been normalized because it has been disseminated in the system as being the natural thing God given. So these are the things which Dr. Ambedkar is talking about, idealistic, when you talk about education. And there, let me tell you talk about one more issue, which is the international importance of issue. For example, his thoughts on labor are considered all over. Okay, because he talks about various kinds of rights, legal rights, okay, women's rights, okay, political representation, he also talks about, you can say, how all various these people, for example, and when we talk about women issue, he talks about them in very detail, okay, as to how women should be given rights. And he is giving various examples of how women have been marginalized throughout the society. He gives example of a Vedic period, you can say Manu. He talks about how in Manu Smriti women have been otherized, you can say they have been always marginalized. Gives a lot of examples. If you read his writings and speeches, he does talk about all these things over. Okay. Before I conclude, let me talk
about one more thing which people, I mean, really know, which is obviously his most important slogan on educate, agitate, and organize. And this is a statement, I would say, a kind of his thought, which has really revolutionized the whole world. Okay, people have really followed it. Okay, this is how we look him as a thinker beyond, going beyond this border, and his philosophy is having influence. Okay, having influence over the world. He's saying, people, you must educate yourself first. First, you educate yourself. Then, if you think that your rights are not given to you, you got to agitate. Okay, agitate and then rights. Okay, so these are the things, I would say, ideals and issues which Dr. Ambedkar has talked about, and which have these are all parts of his philosophy, his thoughts. Okay, and he is undoubtedly one of the greatest intellectuals, global Ratna. We call him Bharat Ratna, but I think he should be given that title of global Ratna. So I think with that, I would stop here. Thank you. Thank you so much, sir. Next, I would like to request Dr. Kaushal Panwar. If we talk about the global activism journey of Dr. Ambedkar, so what were the challenges in mobilization, trust, and image building? Because India में अपनी community को इकट्ठा करना, mobilize करना was not that much difficult. लेकिन outside India, globally ये सब कैसे हुआ? What were the core values? Dr. Kaushal Panwar. My name is Professor Kaushal Panwar, right? You. Okay, okay. First of all, I am very thankful to Ambedkar Society, and especially thanks goes to Sahim, my friend from Lahore. It will be my second talk to Dr. Ambedkar Society of Asian Center, and I would like to speak in Hindi because I am comfortable in Hindi. वैसे बहुत सारी बातें आ चुकी हैं मेरी हमारी international figure, Professor Nandini Shahu is also listening to me. It will be very honor to me. She has joined our talk. And मैं आपको ये कहूँगी कि जितने भी speakers हैं, सभी जो बाबा साहब अम्बेडकर के core values हैं, उनका संदेश आप लोग सुन चुके हैं. मुझे लगता है मुझे रिपीट ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बिंदु जो अभी आपने मेरे सामने रखे हैं उस पर मैं कहूंगी कि जो हमारा प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है. उससे पहले हमें अगर संविधान की उद्देशिका को देखें, अगर संविधान की उद्देशिका हमें पता हो, तो मुझे लगता है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बाबा साहब अम्बेडकर का जो विजन है चीजों को देखने का, जो उनका एक भारत जो विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, उसमें संविधान की उद्देशिका में हमें मिल जाता है. उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी. मैं आपके सामने इसलिए उद्देशिका को रखना चाहती हूँ कि आपके प्रश्न जो आपने मुझे चाहा है कि मैं बिंदु पे बात करूं, वो सारा इस उद्देशिका में समाहित हो जाता है. लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्व, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए. देखिए, उस वक्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब पूरे विश्व में अपनी एक पहचान न केवल बना चुके थे, बल्कि पूरा विश्व उनकी विद्वता का लोहा मानता था, तभी भी उन्होंने बंधुता बढ़ाने के लिए अपना विषय बनाया, मनन का जो विषय बनाया. और मीमांसा थी उनकी कि यह जो भारत का संविधान है उसमें दृढ़ संकल्प होकर अपनी संवैधानिक और आज हम संवैधानिक कर्तव्यों, अधिकारों और जो हमारी जो पूरी मूल संकल्पना है, एक तरह से भारतीय जो सनातन परंपरा है, जो एक तरह से कोर वैल्यूज हैं, जो एक तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा के वो केंद्र बिंदु जो इस विषय को लेकर जो बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं,
उन्होंने उन विषयों को, उन सभी विषयों को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भारत की संविधानता आंदोलन की उस नींव को रखते हुए संविधान में रखा। अगर मैं इसको कहूं कि जो हमारा आधुनिक हो रहा भारत था, तो और आधुनिक हो रहे से मेरा अभिप्राय यह है कि जब हम पूरे वैश्विक दृष्टिकोण से चीजों को देखें, ग्लोबल दृष्टिकोण से देखें, तो भारत में जो सामाजिक परिवर्तन जो चल रहा था उनको मैं 6 बड़े आंदोलन की तरह देखती हूँ, जो बाबा साहब अम्बेडकर के समय से पहले और उनके बाद भी। जैसे हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 अपने गुरुओं को माना है, जिसमें एक क्रांति ज्योति ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले थी। और जब मैंने ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के समय में आधुनिक हो रहे भारत में जो सामाजिक परिवर्तन थे, उनको मैं 6 बड़े आंदोलनों की तरह देखती हूँ। ये मैं बहुत संक्षेप में और बहुत स्किप करते हुए आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। वह है ये कि जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो सत्य शोधक आंदोलन रहा, नंबर 1 पे ये आता है बाबा साहब अम्बेडकर से पहले, और फिर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर का जो सामाजिक मुक्ति का राष्ट्रीय आंदोलन था, जो सत्य शोधक आंदोलन से लिखने हुए जो बिंदु थे, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने जिनको अपना गुरु भी माना, वो सामाजिक मुक्ति का आंदोलन एक तरह से था। और यह एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बनने में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जो विजडम था, जो ज्ञान की जो मीमांसा थी, जो पवित्र ज्ञान था, जो अग्नि से भी पवित्र ज्ञान जो उन्होंने भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों में भी हासिल किया। और मुझे इस बात को शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज जिस पद पर हूँ वह बाबा साहब अम्बेडकर से शिक्षा लेते हुए अपने चाचा और अपने माता पिता का वह मुक्ति का संघर्ष है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ प्रोफेसर के रूप में और डायरेक्टर के रूप में काम कर रही हूँ। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी डिग्रियां ली, वो चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया हो, चाहे न्यूयॉर्क का हो, और लंदन का जो बाबा साहब अम्बेडकर का भवन है, उसमें मुझे अपनी बात करने का अवसर मिला। और उसमें मुझे उनके चरण जहाँ जहाँ पड़े थे, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के हमारे मसीहा, हमारे जो भगवान है बाबा साहब अम्बेडकर, उनके जो कदम जहाँ जहाँ पड़े, उन कदमों को छूना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुक्ति का रास्ता बन जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर का सामाजिक मुक्ति का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, ये एक तरह से 6 बड़े आंदोलनों में दूसरा महत्वपूर्ण था। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब का राजनीतिक सत्ता को मेरे कोलीग डॉक्टर राजेश कुमार ने पॉलिटिकल उनका विजन जो था उसकी जो बात करी, और तमाम जितने स्पीकर से दिल्ली टीचर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्पीकर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात रखी। और वो चाहे उसके बाद आजाद भारत के बाद हम मंडल आंदोलन ले सकते हैं, और फिर आज का वर्तमान दौर, जिसको मैं एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखते हुए कहूंगी कि आज का जो दौर है, जो तकनीक विज्ञान का जो आंदोलन है, जिसपे हम आज बाबा साहब अम्बेडकर को न केवल फिजिकल मोड से एक दूसरे की जगह पर जाकर उनके किए गए कार्यों को कृतज्ञ भारत नमन करता है, बल्कि जो विज्ञान की ने जो तकनीकी जो हासिल की है, और खासकर अगर हम इसी का ही एग्जाम्पल लें कि आज हम यहाँ इतनी दूर दूर से बैठे हुए लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं, यह भी एक तरह से आंदोलन रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का, जो के बाद का जो एक तरह से छठा मैं कहूंगी कि आंदोलन रहा, जो आधुनिक होते हुए भारत का एक बड़ा जो एक योगदान उसको हम कह सकते हैं। तो दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल सही है, अगर आप दलित शब्द का प्रयोग मेरे साथी ने किया, मैं इसमें एक छोटा सा एक लाइन आप लोगों के सामने स्पष्ट करते हुए कहूंगी कि हम सब जानते हैं कि लगातार बहुत ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी ये सवाल उठाया जाता है कि दलित शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। 1936 में डिप्रेस्ड क्लास को बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित शब्द का प्रयोग किया उनके लिए। और बाबा साहब हम सब जानते हैं कि अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और अंतिम थे। उनकी अगर मैं आज के दिन उनको, उन महामानव को नमन करते हुए उनकी जो बैकग्राउंड है उसमें कहूँ कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उनके पिताजी थे, कॉन्टोनेंट में तैनात थे, जिनका मूल नाम एक तरह से आबा अम्बेडकर था। और बाद में ये कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो
बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है उनके शिक्षक के द्वारा दिया गया। हालांकि इसमें एक तरह से दो धाराएं हैं जो ये मानती हैं कि एक उनके शिक्षक ने नाम लिया है, लेकिन जो बाद की रिसर्च हुई है आजकल, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का दौर है, उस टेक्नोलॉजी के दौर में बाबा साहब अम्बेडकर पे भी अलग अलग दृष्टिकोण से रिसर्च किए जा रहे हैं। जो बहुत अम्बेडकर एक्सीलेंसी, हमारे जिस यूनिवर्सिटी में मैं कार्यरत हूँ इग्नू में भी अम्बेडकर एक्सीलेंसी सेंटर बना हुआ है। तो ऐसे भारत सरकार के द्वारा जो चलाई गई जो योजनाएं हैं, और जो जब मैं तकनीकी की बात करती हूँ एक बीच में जरूर कहूंगी कि ये वर्तमान सरकार के द्वारा जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के विजन को, उनके किए गए कार्यों पर बात करने के लिए या उनका नाम घर घर तक पहुंचाने के लिए एक तरह से जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जा रहा है। ये एक तरह से उनके द्वारा किए गए कार्यों का और उनके द्वारा किए गए एक तरह से योगदान का ही ये प्रतिफल है कि आज भारत के कोने कोने से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो परिनिर्वाण दिवस है वह मनाया जा रहा है। आज हम उनके किए गए कार्यों को केवल इसलिए याद नहीं करते कि उन्होंने संविधान लिखकर हम सबका उद्धार किया, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में न केवल अपने परिवार की का सर्वस्व बलिदान किया, बल्कि अपनी आने वाला जो एक तरह कल था, जो भविष्य था भारत का, उस भविष्य को भी एक तरह से उन्होंने एक तरह से ऐसे पायदान पर खड़ा किया जहां से आगे ऊंचा ही देखा जा सकता है, पीछे नहीं देखा जा सकता। हम सब जानते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो डिग्रियां थी, जैसे अभी मैंने कहा कि उनकी जो अर्थशास्त्र की डिग्री है, या फिर कहिए कि जो यूएसए की डिग्री है, या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री है, उन डिग्रियों को हासिल करने में जो उनका योगदान था वह आज के समय में हर एक वह नागरिक केवल डिप्राइव्ड या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का ना हो, बल्कि हर एक व्यक्ति। इसलिए डॉक्टर राजेश ने बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात को इंडोर्स करती हूँ कि भारत रत्न नहीं है बल्कि विश्व रत्न है। विश्व रत्न क्यों है, इसके पीछे का एक बड़ा कारण जो मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम करते हुए देखती हूँ वह यह है कि हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो विक्टोरिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके भी सदस्य थे, और उन्होंने 53 किताबें लिखी, न भूतो न भविष्यति। आज भी जो भाषाओं का ज्ञान है, मैं अभी ये बताना चाहूंगी कि उनको जो भाषाएं आती थी, हिंदी, पाली, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। लगातार वो चाहे पानी की शुद्धता को लेकर श्लोक का उच्चारण करना हो, मंत्रों का उच्चारण करना हो, वह करते थे। और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैं उसी भाषा में पढ़ा भी रही हूँ। उनको अंग्रेजी तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल फिगर थे, पर्शियन भी उनको उतनी ही आती थी, गुजराती, फ्रेंच, जर्मन, इतनी भाषाओं के जानकार थे। 64 सब्जेक्ट के वो मास्टर थे। और उन्होंने जो 8 साल की पढ़ाई होनी थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो उन्होंने केवल 2 साल 3 महीने में पूरी की, ये अपने आप में एक ऐसी विद्वता को दिखाता है जिसको मैं दोबारा रिपीट करूं तो न भूतो न भविष्यति। उनके जो समर्थक थे, हम सब जानते हैं कि अंतिम पड़ाव में बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया, और भिक्षु महतवीर ने, चंद्रमणि जी ने उनको इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा। और आप जानते हैं कि कितने समर्थक उस वक्त उनके साथ थे। 8,50,000 समर्थकों के साथ उन्होंने एक तरह से बुद्धम की दीक्षा ली। और उनको जब कहा गया कि इस युग का आधुनिक बुद्ध उनको कहा गया, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और सबसे बड़ी बात, पाली भाषा का व्याकरण और शब्दकोश उन्होंने लिखा। उन्होंने 9 सत्याग्रह किए, जैसे कि मेरे एक साथी ने भी बताया कि उन्होंने 5 न्यूज़पेपर का संपादन किया। ये तमाम बिंदु ऐसे हैं जो एक तरह से मेरे साथियों ने चर्चा भी की है। मैं एक तरह से इसमें अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगी, थोड़ा सा नेटवर्क अब मेरा स्ट्रॉन्ग है शायद, इसलिए मैंने फिर वीडियो ऑन कर लिया, क्योंकि सबके चेहरे अगर दिखाई ना तो ऐसा लगता है जैसे दीवार के सामने हम बात कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो विजन है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखने की न केवल आवश्यकता है बल्कि उस पर चलने की आवश्यकता है। व्यक्ति का विचार हमेशा जिंदा रहता है।
आज बाबा साहब अम्बेडकर हमारे सामने अगर सशरीर नहीं है, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनकी जो संरचनाएं हैं, उन्होंने भारत का संविधान केवल नहीं लिखा, उन्होंने बैंकों के ऊपर बात की, उन्होंने नदियों के ऊपर बात की, बांध के ऊपर बात की, रुपए की बात की, आरबीआई की स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया। तमाम ऐसे पहलू हैं। हम मोटा मोटा ये तो मानते हैं कि हम लोग महिलाओं के ऊपर उन्होंने बात की है, धर्म के ऊपर बातचीत की है, लेकिन जो पूरी जो समग्रता से जब हम देखते हैं तभी हम उनको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं। वो एक कोई भी ऐसा विषय है ही नहीं जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने ना लिखा हो। और हमारा, हम सब का आज के समय में ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके द्वारा किए गए काम को न केवल उनके ऊपर मतलब चले, बल्कि आगे भी अपनी पीढ़ियों को उनसे परिचित कराएं। हमारा जो 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 बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश है, पे बैक टू सोसाइटी, उनके केवल दिखाए गए मार्ग पर चलना नहीं है, बल्कि उनको व्यवहारिक धरातल पर कैसे लेकर आया जाए। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है समाज में समरसता स्थापित करने के लिए, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उनके हैं, जो उनका राष्ट्र को देखने का, बाबा साहब अम्बेडकर भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र, प्रभुता संपन्न राष्ट्र देखना चाहते थे, और इसलिए उनके मन में किसी भी तरह का कभी भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। जबकि उनकी अगर हम पीछे की जर्नी को देखें तो ऐसा हम कल्पना ही कर सकते हैं कि जिनको इतना शोषित किया गया, पानी पीने के लिए जिनको नहीं दिया गया, जिनको हर कदम पर ये एहसास करवाया गया, चाहे वह दुनिया का कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जो व्यवहार उनके साथ किया गया, उन्होंने उस दोयम दर्जे का व्यवहार। लेकिन भारतीय इतिहास में ये बहुत, मतलब हम अतीत को जितना जानते हैं ना, आज उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम अतीत को कितना समझते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति मेरे अंतिम आज के वाक्य हैं कि हम उनके अतीत को केवल जाने ना, बल्कि उनको समझे, और उनको समझते हुए संपूर्ण भारत को, संपूर्ण विश्व को, विश्व बंधुत्व का जो संदेश महामानव ने दिया है, और एक समग्रता से चीजों को देखने का जो संदेश बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको नमन करते हैं। मैं एक बार फिर से हमारे दोस्त साहिन जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने, मेरी बड़ी डिफिकल्ट था टाइम निकालना, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं बीच में से उठ के, फिर इंटरनेट बंद हो गया, फिर गया, तो ये थोड़ा, जहाँ तकनीकी सुविधाएं हैं उसके डीमेरिट्स भी हैं, तो इसलिए मैं बीच में शायद एक दो स्पीकर सुन भी नहीं पाई पूरी तरह से। मैं एक बार फिर से, डॉक्टर लियाकत मेरे सहपाठी हैं, मतलब सहकर्मी हैं, उनको मैंने बस दो ही कोई भेज पाई थी, दोनों ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर लियाकत, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड प्रोफेसर नंदिनी, थैंक यू। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, खासकर हिमांगी, हमारे जो वक्ता रहे हैं, और डॉक्टर माली देवी, डॉक्टर राजेश, और अम्बेडकर सोसाइटी की जो आज ये मॉडरेटर हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन्हीं के शब्दों के साथ मेरा आप सबको जय भीम। Thank you so much, ma'am, and thank you so much for your colleagues for joining. Next, I would like to request Mr. Umar Javed. Sir, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम recent development की बात करते हैं regarding recognition of caste discrimination, जिसको overall अगर हम globally भी देखते हैं तो different जो हमारे educational institutes हैं US, UK में, उसको अब आके जो है recognize किया जा रहा है। So आप क्या समझते हैं कि क्या ये डॉक्टर अम्बेडकर का ही influence है जो आज तक जो है वो चल रहा है और उसी का result है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले शुक्रिया, आई एम वेरी थैंकफुल। उसके बाद काफी इश्यूज पर बात हुई, लेकिन आपने अब जो क्वेश्चन किया है कि अंबेडकर साहब जो हैं वो आज के दौर में, आज का जो ग्लोबल एरा ये चल रहा है जिसमें हम रह रहे हैं, मेरी आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, इसमें रह रहे हैं, इसमें वो 50s, 60s, 70s, 80s के मुकाबले में भी ज्यादा रेलिवेंट क्यों हो रहे हैं? अपने एरा में तो रेलिवेंट थे ही थे, जो जिस तरह तब इंडिया की सूरत हाल थी, सब कॉन्टिनेंट की सूरत हाल थी, क्लास और कास्ट के इश्यूज थे, वो तो अपनी जगह रेलिवेंट हैं। आज क्यों ज्यादा रेलिवेंट है अंबेडकर साहब की टीचिंग्स, उनका मैसेज, उनके जो बुनियादी पैगाम थे, वो इसलिए कि अगर हम आज का ग्लोबल एरा देखें तो वेस्टर्नाइज्ड वर्ल्ड हो, तरक्की याफ्ता वर्ल्ड हो, डेवलप कंट्रीज हो, या डेवलपिंग जो कहलाते हैं वो हो, एशियन सोसाइटीज हो,
इनके अंदर हमें तेजी से कुछ ऐसे सेंटीमेंट्स नजर आ रहे हैं जिनको हम पॉपुलिस्ट सेंटीमेंट्स कह सकते हैं, फार राइट सेंटीमेंट्स कह सकते हैं। सिर्फ साउथ एशिया ही नहीं, यानी इस टाइम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर जो सूरत हाल है, बल्कि हम खुद मॉडर्न वर्ल्ड को अगर देखें, अमेरिका की बात करें, यूरोप को अगर हम देखें, अमेरिका के अंदर जिस तरह की सॉरी टू पॉलिटिकल, इंटरप्ट यू डॉक्टर, सॉरी प्रोफेसर कौशल पंवर जो है वो हमें जो है फर्दर ज्यादा हमें ज्वाइन नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनको मीटिंग है, उन्होंने पहले बता दिया। सो मैम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, यू मे लीव। थैंक यू सो मच। जी सर प्लीज कंटिन्यू। जी, जिस तरह अमेरिका में हम देखें, जिस तरह की पॉलिटिकल टेंडेंसीज उभर कर आ रही हैं, अभी जिस तरह के इलेक्शन में वहाँ का पॉलिटिकल रुझान हमारे सामने आया, यूरोप के अंदर अगर हम देखें, इंग्लैंड जैसे मुल्कों में कौन सी पॉलिटिकल टेंडेंसीज ऊपर हो रही हैं, जर्मनी जैसे मुल्कों में दोबारा एक मरतबा किस तरह की पार्टीज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के स्लोगन्स थे, अब कई पार्टीज वहां दोबारा ऐसे स्लोगन के साथ सामने आ रही हैं। फ्रांस की अगर हम सूरत हाल देखें, किस तरीके से वहाँ फार राइट टेंडेंसीज जो हैं वो ऊपर हावी हो रही हैं। इवन ये सेकेंडरी कंट्रीज की हम बात करें, हम स्विट्जरलैंड की बात कर लें, फिनलैंड की बात कर लें, स्वीडन की बात कर लें, यहाँ पर तमाम जगहों पर जिस तरह 50, 60, 70s में एक अल्टरनेट पेश किया जाता था, एक मुतबादल पेश किया जाता था, अल्टरनेट प्रोग्राम, अल्टरनेट मैनिफेस्टोस पेश किए जाते थे मार्केट इकोनॉमी को लेकर, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक हमें अल्टरनेटिव अप्रोचेस नजर आती थी। अब वो अप्रोचेस नजर नहीं आती। इस वैक्यूम को फिल कर रही हैं दुनिया भर के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ, जो फार राइट टेंडेंसीज हैं, पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज हैं, या जिनको कई जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो फाशिस्ट टेंडेंसीज भी कहते हैं। ये सिर्फ साउथ एशिया नहीं, यूरोप और अमेरिका का भी ये हाल है। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर साहब की राइटिंग्स, डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो पैगाम है वो ज्यादा हावी हो जाता है, ज्यादा उसकी आज रेलिवेंसी हो जाती है। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट हो, यूरोप के अंदर बाकी चलने वाली मूवमेंट हो, अब यहाँ पर जाहिर बात है कास्ट का और क्लास का एक डिफरेंस है, यानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हिस्टोरियन भी मानते हैं कि कास्ट जरा और इशू है, क्लास जो है वो या रेस थोड़ा सा दूसरा इशू है, लेकिन फिर भी फंडामेंटल अगर हम प्रिंसिपल देखें तो इसमें अप्रोच तो 22 की है ना। अप्रोच तो ये है कि कई सेगमेंट्स को डिप्राइव रखा जाए एजुकेशन से, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से, चाहे कहीं क्लास का इशू है, कहीं कलर का इशू है, या कहीं कास्ट का इशू है। तो ऐसे में अगर आज के दौर में हम डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स को देखते हैं, कोई भी उनकी राइटिंग्स आप देख लें, एनिलेशन ऑफ कास्ट है जिस तरह पढ़ी जाती है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स है, बुद्धा और कार्ल मार्क्स है, तो वो हमें आज भी कहीं ना कहीं रेलिवेंट, उनकी एक रेलिवेंस दिखाई देती है कि यार ये तो वाकई ही ऐसे इश्यूज हैं जो आज के दौर में चल रहे हैं। इतना सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस है, खुद डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं अमेरिका और यूरोप के अंदर कोई अल्टरनेट प्रोग्राम नहीं है। बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक से ही प्रोग्राम को थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंज के साथ पेश करती हैं, फंडामेंटल या जो असल इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में ये ज्यादा रेलिवेंट अप्रोच हो जाती है। अब इसका जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा, उनका काम था, उनकी स्ट्रगल थी, इसका आज कैटेगोरिकल हम क्या जो है वो इम्पैक्ट ले सकते हैं। कुछ कैटेगोरिकल हमें इम्पैक्ट नजर तो आता है। इसका सबसे बड़ा जो सबूत है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो कुछ खुद लिखा, उसके अलावा जो सबसे बड़ा हमारे पास प्रूफ है वो जिस तरह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो जनवरी 1950 में फंक्शनल हुआ, उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के इस तरह पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की किस तरह की इनपुट थी, किस तरह का उनका विजन इदराक था। वो सिर्फ वेस्ट मिनिस्टर या इंग्लैंड की डेमोक्रेसी से मुतासर हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बल्कि वो उसमें फ्रेंच के असरात भी हैं, उसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन के असरात भी हैं, बाकी भी दुनिया भर के जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए उन सब के असरात हमें नजर आते हैं। लेकिन नीचे ट्रिकल डाउन क्या होता है, यानी पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी हो, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो मर्जी लिखा हो, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई हो, वुमेन राइट्स की बात की गई हो, एजुकेशन राइट्स की बात की गई हो, इकोनॉमिक राइट्स की बात की गई हो, नीचे उनका ट्रिकल डाउन नहीं आता। और यहाँ भी हमें डॉक्टर अंबेडकर साहब से 2-3 जो है वो बातों की रहनुमाई मिलती है, हमें गाइडेंस मिलती है। एक तो ये कि एजुकेशन पर तो जिस तरह बात अभी हुई भी
बाकी हमारे साथियों ने, क्योंकि एजुकेशन पर तो डॉक्टर साहब का जोर था, एजुकेशन को तो वो बुनियादी एक टूल कहते थे। और खुद अगर हम उस वक्त के, जिस एरा की हम बात कर रहे हैं 30s और 40s के, उस वक्त के अगर हम जो ये स्ट्रगल चल रही थी, फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, उस वक्त के लीडर्स के साथ भी अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, ये जवाहरलाल नेहरू जैसे, ये मोहनदास गांधी जैसे, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा वेल रेड, ना सिर्फ ये कि एकेडमिक हवाले से, लिखने के हवाले से, उनकी किताबों के अंदर जो रेफरेंसेस आते हैं उस हवाले से बिलाशुबा हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ही थे। तो एक तो ये कि एजुकेशन के हवाले से, उसके बाद जो डॉक्टर साहब का फोकस था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के हवाले से, ये बहुत अहम बात है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के हवाले से उन्होंने जिस तरह राइट्स लेने की कोशिश की, जिस तरह वो पूना पैक्ट हुआ, वो खैर एक लंबी पूरी दास्तान है। जिस तरीके से उन्होंने एससी कास्ट, एससी के लिए, दलित भाईचारे के लिए राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स लेने की कोशिश की, वो अपनी जगह अहम है। और ये पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, मैं अगर एज अ स्टूडेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पॉलिटिक्स, साउथ एशियन पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के तौर पर बात करूं, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमें फिर भी नजर आती है। यानी इंडिया के अंदर काफी हद तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नजर आती है। रिजर्वेशंस भी हैं वहां की असेंबलियों में, वहां हमें कई बड़े नाम नजर भी आते हैं, चीफ मिनिस्टर के लेवल तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के से बढ़कर अगर ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तक ही महदूद होता तो ये मसला हल हो चुका होता। ये मसला असल में आगे जाता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की तरफ भी। इकोनॉमिक जो वेलबींग है, कि इकोनॉमिक टूल जो है वो किन के हाथ में है। अभी ये बात की गई कि जिस तरह जो अलीटिस्ट अभी मॉडल है, जो अलीट के पास जो है वो टूल हैं, वो बहुत बड़ा जो है वो इस टाइम एक इशू बना हुआ है। तो ये जो अलीट के पास इस तरह के टूल के, जिसमें वो किसी हद तक दुनिया के अंदर, मैं दुनिया के रूलिंग एलीट की बात करूं, किसी हद तक थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की भी इजाजत दे देते हैं, किसी हद तक एजुकेशन की भी जो है वो मौके फराहम कर देते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होती है, जो इकोनॉमिक्स को अपने हाथ में लेना होता है, ये सबसे अहम बात है। और मैं यही समझता हूं कि आज के दौर में हमें ग्लोबल लेवल पर जो क्राइसिस नजर आ रहा है इकोनॉमिक सूरत हाल की वजह से, इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से, जिसकी मैनिफेस्टेशन फिर पॉलिटिकल हवाले से हो रही है, जिस तरह मैंने कहा फार राइट हवाले से, पॉपुलर सेंटिमेंट्स के हवाले से, फाशिस्ट टेंडेंसीज जो दुनिया भर में उभर रही हैं, इस हवाले से इनकी रोकथाम के लिए या इनके उभार की बुनियादी वजह यह है कि मेजॉरिटी को इकोनॉमिक हवाले से डिप्राइव रखा गया है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के हवाले से खास तौर पर डिप्राइव रखा गया है। कॉस्मेटिक लेवल पर कुछ हो जाता है, कॉस्मेटिकली हो जाता है जी कि अमेरिका में बाराक ओबामा देखो सदर बन गया, बाराक ओबामा जैसा शख्स भी सदर बन सकता है 2008 में, लेकिन ये कॉस्मेटिक होती है। इसके नीचे हम स्ट्रक्चर लेवल पर बात करें, इकोनॉमिक लेवल पर बात करें, तो हमें वही डिप्रिएशन नजर आती है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का जिस तरह मैंने जिक्र किया, उसका किस हद तक नीचे ट्रिकल डाउन है, ये एज अ स्टूडेंट ऑफ साउथ एशिया हम जानते हैं। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है, किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि जो मेजॉरिटी है उसको इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं दिए गए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के मौके नहीं दिए गए, तो फिर वो जज्बात में आकर, वो इमोशंस में आकर दूसरी टेंडेंसीज के साथ अपने आप को जोड़ लेती हैं, जिन टेंडेंसीज के पास नारे तो होते हैं, स्लोगन्स तो होते हैं, लेकिन बामकसद हल नहीं होता। कैटेगोरिकल उनके पास सॉल्यूशंस नहीं होते, सिर्फ नारे होते हैं, स्लोगन्स होते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। अब इस इमोशनलिज्म से बचना, वो भी हमें डॉक्टर अम्बेडकर की अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रगल को देखें उसमें ही नजर आ जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आप मिसाल लें, 1939 से 1945 तक इंडिया के अंदर जिस तरह वो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की गई और बड़े कई जज्बाती सेंटिमेंटल स्लोगन्स का सहारा लिया गया, डॉक्टर अम्बेडकर साहब इन स्लोगन्स, इस इमोशनलिज्म के तहत नहीं आए। वो अगर हम उनकी स्ट्रगल देखें, इस जो इमोशनल पॉलिटिक्स हो रही थी या जो स्लोगन्स की पॉलिटिक्स हो रही थी 40s में, उसके वो भाव में नहीं बहे, बल्कि उन्होंने कैटेगोरिकल काम ही करने की कोशिश की कि अभी अंदर रहते हुए सिस्टम के, उस वक्त सिस्टम के अंदर रहते हुए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बेहतर बनाया जाए, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाया जाए, बाकी मामलात को बेहतर बनाया जाए। तो इसका हमें हल भी डॉक्टर अम्बेडकर साहब की ही जो है वो इस तरह पॉलिटिकल स्ट्रगल में मिलता है।
बाकी जिस तरह मैंने बात की कि लिखने की हद तक, बोलने की हद तक, मैसेजिंग की हद तक, आज डॉक्टर अम्बेडकर साहब के पास हमारी टीचिंग्स है, उनकी टीचिंग्स हैं, उनकी किताबें हैं, बुक्स हैं, हर कोई उनकी किताब को पढ़ सकता है। दुनिया की तमाम बड़ी जुबानों में डॉक्टर अम्बेडकर साहब की राइटिंग्स ट्रांसलेट हो चुकी हैं या ट्रांसलेट करने का सिलसिला भी तेजी के साथ जारी है। लेकिन असल बात वही है कि जो एक तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बाद फिर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ये मैं समझता हूँ कि आज के दौर में, आज का जो पूरा, चूंकि हम डॉक्टर अम्बेडकर साहब को एक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल के तौर पर आज डिस्कस कर रहे हैं कि ग्लोबल हवाले से उनकी क्या रेलेवेंस है, सिर्फ ये नहीं बियॉन्ड बॉर्डर, सिर्फ इंडिया की हद तक नहीं या सब कॉन्टिनेंट नहीं, बल्कि दुनिया भर में। तो दुनिया भर में हमें उनका जो ये राइटिंग्स, उनके मैसेज का एक क्रक्स नजर आता है। वो क्रक्स यही है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन जो मेजॉरिटी हैं, जो अक्सर क्लासेस हैं, डिप्राइव्ड क्लासेस हैं दुनिया भर में, जिनको किसी जगह कास्ट कहा जाता है, किसी जगह क्लास कहा जाता है, किसी जगह कलर की वजह से इश्यूज है, किसी जगह रेस की वजह से इश्यूज हैं, उन सब का बेहतरीन हल ये कि अगर वो इकोनॉमिक हवाले से, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के हवाले से ज्यादा अपने आप को जल करें, इकोनॉमिक जो है वो सॉवरेंटी लें, इकोनॉमिक पावर लें। अलीटस्ट जो मॉडल है, अलीटस्ट मॉडल जो रिसोर्सेज को बिल्कुल महदूद रख रहा है, जिस तरह अभी बात की भी कि डॉक्टर साहब की खुद जो, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की खुद जो इकोनॉमिक के हवाले से स्टडी थी, मैशत के हवाले से स्टडी थी, तो आज का जो ये अलीटस्ट मॉडल बन चुका है, जहां रिसोर्सेज तेजी के साथ महदूद होते जा रहे हैं, चाहे वो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज हो, यूएसए हो, यूरोप हो, एशिया के अंदर ममालिक हो, वहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो 2 या ज्यादा 3% तक हैं, और उसके बाद जो नीचे अक्सर 90% हैं, उनके पास थोड़ा सा ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जिस वजह से हमें कई ममालिक में थोड़ी बहुत चंद करोड़ों में मिडिल क्लास नजर आती है, लेकिन फिर भी अक्सरियत आज जो है वो डिप्राइव है, मेजॉरिटी आज डिप्राइव है। क्यों डिप्राइव है? इसी वजह से कि एक एलिटिस्ट मॉडल जो अपने मफादात को, अपने इंटरेस्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो मजीद रिसोर्सेज की इस वसाइल को, रिसोर्सेज को मजीद सुकेड़ है, और जिसका इजहार हमें वर्स्ट तरीके से नजर आ रहा है दुनिया भर के अंदर, अमेरिका, यूरोप, साउथ एशिया, एशियन सोसाइटीज के अंदर, फाशिज्म की सूरत में, पॉपुलिज्म की सूरत में। तो इसका हल डॉक्टर अम्बेडकर साहब की राइटिंग्स के अंदर ही छुपा हुआ है, स्ट्रगल के अंदर ही छुपा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर आज जो हम समझ सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब की राइटिंग से, उनका ये पैगाम, जिस तरह बात की भी गई कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, ये मेरे ख्याल से जो है वो बेहतरीन जो है वो स्लोगन, जिसके अंदर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी आ जाती है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी आ जाती है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। और आपके लिए कमेंट भी है डॉक्टर लियाकत साहब की तरफ से कि आप उर्दू बहुत अच्छी बोल रहे हैं। शुक्रिया जी। डॉक्टर हिमंगी कदलक की तरफ दोबारा बढ़ूंगी। मैम, इफ यू टॉक अबाउट, जैसे उमर जावेद साहब ने बात की पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, अगर हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बात करें, फॉर एग्जांपल ग्लोबल एजुकेशनल इनइक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें क्या तरीका क्या है, क्या वेज हो सकते हैं जिसमें हम डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी को अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशनल इक्वालिटी को, जो है ओवरऑल ग्लोबली अगर हम देखें उसको, किस तरह से हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं? जैसे मैं अभी ये चेयर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर करके हूँ, और हमारा चेयर ही डॉक्टर अम्बेडकर थॉट एंड कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन इन इंडिया। एक्चुअली ये जो चेयर है, ये 25th चेयर है इंडियन गवर्नमेंट में, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो है डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन, वो स्पॉन्सर करती है इसको। तो ये चेयर जो है अभी फिलहाल ये पहला चेयर है जो एजुकेशन के ऊपर काम बोलता है। जिस तरीके का मेरा खुद का अनुभव है अभी तक का एकेडमिक्स में या फिर सोशल मूवमेंट में, कहीं पे भी आपको डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी या जो भी रिवोल्यूशनरी फोरफादर होके गए हैं, महात्मा ज्योतिबा से लेके सावित्रीबाई फुले या बिरसा मुंडा या जो भी सोशल फिलॉसफर रिवॉल्यूशनिस्ट होके गए हैं, कहीं पे भी जब हम एजुकेशन कर रहे थे तभी कभी भी हमने एकेडमिक्स में कभी उनके बारे में या उनके मूवमेंट के बारे में कभी जाना नहीं।
सिर्फ इतना रहता था, और अभी भी इवन एकेडमिक्स में भी इतना ही है कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या है, उन्होंने क्या किया, कैसे कैसे किया, बस इतना ही है। बट जो कोर फिलोसॉफी है उनकी, अप्रूव्ड और अनिहिलेट द कास्ट, ये कभी रिवेल नहीं करते हैं। ये जो कोर फिलोसॉफी है वो हमेशा सोशल मूवमेंट से ही आती है। और सोशल मूवमेंट जो है वो आप कब इंटरैक्ट होते हैं, जब आपके घर से कोई सोशल मूवमेंट में है, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई सोशल मूवमेंट में है, या आपके आजू बाजू के लोग कोई सोशल मूवमेंट में है, वो उस तरीके से होते हैं। अभी जब बाबा साहब की या जो भी फुले जी की या सावित्रीबाई फुले की, अभी एटलीस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो थोड़ा बहुत सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले को मान रहे हैं या उनकी जयंती वगैरह मना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अभी पता चल रहा है, बच्चों को पता चल रहा है। लेकिन एकेडमिक्स में जिस तरीके की फिलोसॉफी उनकी होनी चाहिए, जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कास्ट इन इंडिया, ये जो उनका जो निबंध है या जो उनका जो उसके ऊपर उन्होंने जो लिखा है, जो ऐसे है, वो पढ़ने के लिए है। वो यहाँ पे इंडिया में ऐसा पढ़ने के लिए कोई नहीं, कहीं नहीं। जैसे 23 वॉल्यूम से बाबा साहब के जो उन्होंने राइटिंग एंड स्पीचेस है, तो जब भी कभी भी हमें टॉक देना पड़ता है या कभी भी कहीं पे जाना है, तो वहां से ही रिसोर्सेस वगैरह लेते हैं। लेकिन बच्चे जो है एकेडमिक्स में है, वो सारी चीजें नहीं होती। तो कैसे होना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो चल रहा है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा हिंदुइज्म के फिलोसॉफी के ऊपर है, और कास्ट सिस्टम जो है वो हिंदुइज्म के या ब्राह्मणिकल फिलोसॉफी के ऊपर खड़ी हुई है। तो ये जो है ना बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो अगर बीइंग एकेडमिक्स या सोशल एक्टिविस्ट या सोशल रिवॉल्यूशनिस्ट करके हम काम करें, तो हमें जगह जगह पे इस तरीके के इवेंट करने पड़ेंगे। और जिस तरीके से अभी ग्लोबल जो चर्चाएं, और बहुत डॉक्टर बाबा साहब को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशनल जो बेंड है वो ऑलमोस्ट आज अभी भी कंटेम्परेरी वर्ल्ड में भी कोई भी मैच नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए nobody has dared to cross अम्बेडकर, दैट इज द फियर ऑफ अम्बेडकर। और इसीलिए वो डर के मारे जो भी चल रहा है वो चलने दे रहे हैं, क्योंकि उनको क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है या उनका जो एक्सपीरियंस है या उनकी जो कैपेसिटी है उन्होंने उस तरीके से बनाई नहीं है। दूसरे तरीके की क्या है, जो बाबा साहब की जो फिलॉसफी है, बाबा साहब ने जो भी लिखा है वो रियलिटी बेस्ड है। इवन बुद्धिज्म भी उन्होंने इसलिए चुना है बिकॉज वो रियलिटी को मानता है। वो रियलिटी को, वो बुद्धिज्म में गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, कोई नहीं है। जैसे बुद्ध खुद बोले हैं कि एवरीवन कैन बिकम अ बुद्धा। तो अगर आप में एवरी पर्सन हैज पोटेंशियल एंड कैपेसिटी टू बिकम अ बुद्धा, जो इस तरीके का जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है वो एटलीस्ट कोई रिलीजन नहीं देता। हाँ, तो इसीलिए आई थिंक बीइंग इंटेलेक्चुअल बाबा साहब को वो ज्यादा अपील किया होगा कि वो प्रैक्टिकल बेस पे बुद्धिज्म है या प्रैक्टिकल बेस पे फिलोसॉफी को करता है। और इवन बुद्धा ने खुद बोला है कि मतलब अगर मेरा रिलीजन आउटडेटेड है तो आप मत लो, जिस तरीके से आपको प्रैक्टिकल वे से आपको अपील कर रहा है उतना ही ले लो। तो उस तरीके का कस्टमाइज जो बोलते हैं, कस्टमाइज अप्रोच जो है वो सिर्फ यही रिलीजन में है। और इसलिए बाबा साहब ने जो भी चुना है या कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया है या रिलीजन चुना है या उन्होंने जो फिलोसॉफी वो जो बात करते हैं, जैसे महिलाओं के बारे में भी जो अगर बात करते हैं या रेस के बारे में, कास्ट के बारे में है, जेंडर के बारे में, अक्रॉस ऑल सेक्शंस, ऑल डिवीजन ऑफ द पीपल, हर तरीके का जो है, तो ये कंबाइंड और कॉम्प्रहेंसिव जो पर्सनैलिटी है वो बहुत इंटेलेक्चुअल को अपील करती है। और बाबा साहब उनको ही समझ सकते हैं जिनका रैशनल चल रहा है, रैशनल माइंड जो चल रहा है। अगर आप ब्लाइंड माइंड से चलोगे, हाँ आप जो बोल रहे हैं वो सच है, आप जो नहीं, तो आप बाबा साहब को नहीं मान सकते हैं। तो आपको बाबा साहब को आपको जानना है तो उनको पढ़ना पड़ेगा ही। तो इसलिए जो एजुकेशनल जो बैंड है, जैसे हमारे घर में भी जो है या जब भी कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि पहले पढ़ो,
अगर आप पढ़ोगे एंड क्वेश्चन रेज द क्वेश्चंस, ये बहुत बड़ी चीज है कि आप क्वेश्चंस करना सीखो, भले आपके रिलीजन के बारे में है, आपके रहन सहन के बारे में है, आपके बिहेवियर के बारे में है, आप क्वेश्चंस करना सीखो। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे रिवॉल्यूशन नहीं आएगा, और जो भी रिवॉल्यूशन हुआ है वो क्वेश्चन से ही हुआ है, और जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक है, एजुकेशन का मेन पर्पज ही वो है, ट्राई टू क्वेश्चन। अगर और एजुकेशन तब तक चलेगा जब तक आप क्वेश्चंस करते रहोगे, रैशनल माइंड जब तक चलेगा आप तब तक क्वेश्चंस करते रहोगे। जहां पे आप क्वेश्चंस को बंद करोगे वहां पे ऑर्थोडॉक्सिज्म या वहां पे ब्लाइंड फेथ चालू होगा। तो इसीलिए हमें जो भी हम यहाँ पे भी प्रोग्राम करते हैं तो ओपन डिस्कशन रखते हैं, क्वेश्चंस रखते हैं, डिबेट रखते हैं, ताकि बोलो, क्वेश्चंस करो, आर्ग्यूमेंट करो। तो उस तरीके से मुझे ऐसे लगता है एकेडमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, फैमिली लेवल पे एंड हर लेवल पे हमें उनकी फिलोसॉफी को लेके जाना है। अगर आपको उनको लेके जाना है, उनकी लिटरेचर को उनके घर तक या उनके मोहल्ले तक पहुंचाना पड़ेगा, ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच मैम। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर माली देवी से कि इंडिया में जब हम डॉक्टर अम्बेडकर के दौर की बात करते हैं तो लोगों ने इनइक्वालिटी को एक तरह से एक्सेप्ट किया हुआ था। सो डॉक्टर अम्बेडकर ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और एक इनिशिएटिव लिया और सारी जो मूवमेंट चली। तो आप क्या समझती हैं कि जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की जो एक मूवमेंट थी या जो एक कॉन्सेप्ट था वो बाकी आइडियोलॉजी से किस तरह से डिफरेंट है जो अम्बेडकर साहब का था? यस, बाकी आइडियोलॉजी से तो वो बिल्कुल कॉन्ट्रारी है। आप देखिए ना, बाकी आइडियोलॉजी में जितने भी स्पेसेस हैं वो सारे एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, जैसे अभी उमर साहब ने कहा डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, या राजेश सर ने कहा कि दे आर द वंस हु आर आउट ऑफ द बाउंड्रीज, है ना। तो उन सारे सेक्शंस के लिए बाकी आइडियोलॉजीज में चाहे वो आप कह लो डोमिनेंट आइडियोलॉजी, कास्ट एलिट आइडियोलॉजी, इन सारी आइडियोलॉजी में वो स्पेसेस क्लोज्ड हैं उन सब के लिए। पानी तक को छूने का जो अधिकार था वो था नहीं। अभी रिसेंटली अभी हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर आप देखोगे अभी भी उस गांव में पानी छूने का अधिकार नहीं है ना। सो इस तरह से वो सारी स्पेसेस तब से क्लोज्ड थी। बाबा साहेब की जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी इक्वालिटी को लेकर, किस तरह से उन्होंने उन स्पेसेस को हम तक पहुंचाने का, हमें वो छूने का जो अधिकार है वो उस आइडियोलॉजी से आया है। वो आप देखिए कि इस पूरी आइडियोलॉजी में जो शिफ्ट हुए हैं, जैसे कि अभी हेमांगी दी बात कर रहे थे कि किस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है मूवमेंट्स का, ये आइडियोलॉजी बेस्ड से ज्यादा आप देखेंगे ये सोशल बैरियर्स को तोड़ने वाला प्रोसेस है। जितने भी सोशल बैरियर्स है, चाहे वो मंदिर में एंट्री ले लो, चाहे वो किसी तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन, या जिस तरह से हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, वो सारी डिस्कशन, वो सारे डायलॉग्स, वो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो सोच है उसी का परिणाम है। और वो परिणाम जो है वो बाकी आइडियोलॉजीज तो कभी मैच ही नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी आइडियोलॉजीज बहुत ही नैरो और बौद्धिक तौर से बहुत ही निम्न कहूंगी मैं, बहुत ही बौद्धिक तौर से निम्न है कि वो उस तक पहुंच ही नहीं सकती है। बाबा साहब की आइडियोलॉजी में कोई डिवाइड नहीं है। बाबा साहब की आइडियोलॉजी में एक्सेप्टेंस है एज अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन डिग्निटी को सर्वोच्च पैरामीटर पर रखा गया है। वो सबको एज अ ह्यूमन बीइंग देखते हैं और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को वो मानते हैं कि जो मानव की जो बुद्धि है ना, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो अपना क्रांति का पथ एवं अपने अपने आप की डिग्निटी को मेंटेन करने का पथ हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, जो कि बाकी आप किसी आइडियोलॉजी में नहीं देखेंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे, हम सोशल वर्क से मैं हूँ, और सोशल वर्क में हम जो पढ़ते हैं उन सब में अंबेडकर जो आइडियोलॉजी है उसकी स्पेस बहुत कम है। उनका नाम, उनकी आइडियोलॉजी हम सिर्फ सुन पाए, हमने जाना तब जब हम
उस फील्ड में आई जहां पर हमारे साथ जो कॉम्पीट कर रहे हैं वो सारे वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी से हैं। तब हम जान पाए कि हम कहाँ अपने आप को लोकेट करते हैं और कहाँ हमारा सोलेस है, मतलब कि कहाँ हम अपने आप को सिक्योर और सेफ पाते हैं, किस आइडियोलॉजी में। एंड दैट इज वेयर अम्बेडकर्स आइडियोलॉजी स्टैंड। एंड इट इज नॉट अबाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी। थोड़ा सा मैं इससे डिफरेंशिएट करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इक्वालिटी इनइक्वालिटी से जब आप उसको कंपेयर करते हो, सोशल इनइक्वालिटी को, आप उन सारे बर्थ रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशंस को परे कर देते हो जो कि जिसके साथ हम सब जिए हैं। कास्ट जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की फॉर्म बाद में आता है, वो पहले सोशल इनइक्वालिटी है। और उस सोशल इनइक्वालिटी से निकलने के लिए हमें कॉग्निटिव लिबरेशन चाहिए, यानी कि बौद्धिक स्वतंत्रता चाहिए उन ख्यालों से, उन स्टिग्मास, उन प्रेजुडिसेस से जो कि कास्ट रिलेटेड बैरियर्स हैं। आप प्रोफेसर सुखदेव थोराट की रिपोर्ट आप देखिएगा, जो किस तरह से जो एम्स में पढ़ रहे छात्र थे वो रिजर्व्ड कैटेगरी से आए हुए छात्रों को किस तरह से ट्रीट करते थे, कैसे उनके दरवाजों पर, क्योंकि वो रिजर्व्ड कैटेगरी से थे तो उनको स्टिग्मेटाइज्ड और एक पर्टिकुलर लेबल दिया करते थे। सो इसलिए आप देखेंगे ये जो पूरी जर्नी है अम्बेडकर राइट थॉट्स की, ये जर्नी जो है वो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज, चाहे वो मार्क्सिज्म कह लो, चाहे वो हिंदुइज्म कह लो, चाहे वो बाकी और डोमिनेंट आइडियोलॉजीज के बिल्कुल कॉन्ट्रैरी है। मैं उनमें एकदम समरसता नहीं देखती हूँ। और वो आधार, मानवीय आधार जो है वो केवल सिर्फ अम्बेडकर सर की फिलॉसफी में है, बाकी और किसी आइडियोलॉजी में वो कॉग्निटिव लिबरेशन नहीं है। मैं रिसेंटली ताइवान आई विजिटेड, और वहां पर मैंने देखा कि जिस तरह से उन्होंने अम्बेडकर को अपने एजुकेशनल सिस्टम में, नॉलेज में और प्रैक्टिस में डाला है, मुझे नहीं लगता कि बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में किसी ने भी उस लेवल पर अंबेडकर साहब की फिलॉसफी को अपने नॉलेज सिस्टम्स, अपने प्रैक्टिस और अपने ख्यालों में डाला है। सो वो जो चीज है वो कॉग्निटिव लिबरेशन उसको कहते हैं, और वो सिर्फ मुझे वो ताइवान में देखने को मिली। एंड आई रियली वांट कि कहीं ना कहीं हम उनसे सीखें और हम अपने बाकी साउथ एशियन और यूरोपियन काउंटर पार्ट्स में भी वो आइडियोलॉजी को प्रमोट करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर राजेश कुमार सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन शॉर्ट बताइएगा कि जो ग्लोबल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उस पर किस तरह से इन्फ्लुएंस है डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी। Yeah, thank you so much. Before we come to the topic, let me briefly, and just, very shortly, in short, tell. I think Hemangi, you raised a question regarding education. I think she might have missed it. One of the important elements of, I think contribution or significant contribution which Dr. Ambedkar made towards education was also the fact that he promoted education amongst the people. Let me tell you, he made a statement that education is something which ought to be brought within the reach of everyone. And he emphasized the fact that policy, therefore, ought to be to make higher education as cheap to the lower classes as it can possibly be made. Remember, this is to be noted. There are many people who do not emphasize on this point. But he wanted this education to be very cheap so that each one of us, even a person coming from deprived section or upper classes, those who are, poor people, they could benefit out of it. Okay. And he said that if you deny that education, that means you are creating a situation full of injustice. No. Now, coming to this point of, global democracy, so let me tell you why Dr. Ambedkar is known throughout the world, the whole world, is because of his contribution towards, as I told you, I was talking about enlightenment for ideals, and those are very, very important ones, and most of them is obviously, I think, the most important. The contribution is towards justice, I would say, because justice is one dimension, which covers almost, I think, each section of the society. The whole world over, I think, be it upper class, lower class, whatever you can say, people have been fighting for justice. Now we talk about, you can say, maybe more than 52 types of sexuality, sex forms, sexual forms. People are talking about all LGBT. So many things are there.
they are all fighting for justice. So one of this, I would say, contribution is towards, I mean, going for a justice, I mean, even a person, suppose in the family, so wife is fighting, at times, okay, she feels as if, I mean, she has been living in a family where, I mean, husband is becoming so patriarchal in nature that he has been exploiting us, so she's fighting for justice. A small kid could be fighting against. Nowadays, let me give an example of my own family. I mean, my own son. One day he was telling me, I was just scolding him, okay, why you're not studying properly? Then he said, Papa, you don't know that we are living in a liberal world. If you scold me, if you beat me, I mean, I'll go and complain against you. I mean, this is one example I'm giving you. I mean, justice is something which is almost relevant to almost each section of the society, the whole world over, you can say. However, I am not undermining the other ideals also, okay? But when you're talking about social democracy, global democracy, all these four ideals are equally important, I mean, justice, liberty, equality, and fraternity. The whole French Revolution was fought over this, liberty, equality, fraternity, if you remember, okay? And I think Dr. Ambedkar's contribution has been immense towards this, okay, establishing global democracy, I would say. When you talk about democracy, it also wants political, economic, social democracy. And I think only one who does talk about economic democracy, also establishing economic democracy, not only political, but social and economic democracy also. So these are the significant contributions which he has made towards establishing, I would say, global democracy. Okay, thank you. Thank you so much, sir. Moving towards Umar Javed साहब, sir, as you are from Pakistan, so I would request कि आप थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो फिलॉसफी है, लेगेसी है, उसका जो पाकिस्तान में सोशल मूवमेंट्स चल रही हैं, जो स्ट्रगल्स चल रही हैं, उनमें किस तरह से इन्फ्लुएंस है और किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि लिखने की हद तक तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें, लॉज को अगर हम देखें, तो वो हमें नजर आता है। जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के भी या इंडिया के भी फंडामेंटल राइट्स का भी जिक्र है, जिस तरह वहाँ पे एजुकेशन राइट्स का भी जिक्र है, वुमेन राइट्स का भी जिक्र है। असल मसला है इनकी इम्प्लीमेंटेशन का, असल मसला है इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अब स्पेसिफिकली आपने पाकिस्तान के हवाले से सवाल किया, तो 1947 तक तो ठीक है, वो एक तरह का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, एक तरह की हिस्ट्री या एक तरह का काफी हद तक सियासत में रहा। उसके बाद इशू क्या हुआ 1947 के बाद, इंडिया की आज़ादी के बाद, पाकिस्तान की फाउंडेशन के बाद, पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर जो नेशन स्टेट थी, नेशन स्टेट का एक बुनियादी, एक बेसिक जो डिमांड होती है, वो होती है फ्यूडलिज्म को एबॉलिश किया जाए, फ्यूडलिज्म को खत्म किया जाए। ये किसी भी आज के दौर में नेशन स्टेट का पहला तकाजा होता है। किसी हद तक, मैं नहीं कहूंगा कि मुकम्मल तौर पर, किसी हद तक जिस तरह इंडिया में ये कोशिश भी की गई, शुरू में ये कोशिश भी की गई कि वहां पर जो क्लासिकल जिम्मेदारी है उसको खत्म किया जाए। पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बड़े लेवल पर वहां कोशिश हुई, पाकिस्तान के मुकाबले में वहां ये चीज ज्यादा पेनिट्रेट हुई कि जिम्मेदारी, जागीरदारी, फ्यूडलिज्म को खत्म किया जाए। पाकिस्तान में एज अ नेशन स्टेट ये रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो पाई। अब जब नेशन स्टेट में हम रह रहे हैं, लेकिन नेशन स्टेट की जो कई बुनियादी फंडामेंटल्स होते हैं उनको हम फॉलो नहीं करते, तो फिर वो हमें पॉलिटिकल क्राइसिस की सूरत में नजर आता है। जिस तरह हमें यहाँ आया, सिस्टम डिरेल हो जाता है, डेमोक्रेसी डिरेल हो जाती है, मार्शल लॉज का एक्सपीरियंस होता है, फिर लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, लोगों को अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, लोगों को बोलने के राइट्स के लिए स्ट्रगल चलानी पड़ती है। यानी जो एक नेशन स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें इंश्योर कर रही होती है, उन चीजों को भी लेने के लिए एजिटेट करना पड़ता है, उन चीजों को लेने के लिए भी तहरीकें चलानी पड़ती हैं, मूवमेंट्स चलानी पड़ती हैं, जो किसी भी नेशन स्टेट के सिटीजन का एक बुनियादी, एक फंडामेंटल राइट जो है वो तस्वर होती हैं। ये बहुत बड़ा इशू हो गया। और इसमें भी जिस तरह हमने कहा कि जिस तरह अंबेडकर साहब की डेमोक्रेसी के हवाले से, और खास तौर पर जो वर्ड यहाँ पर वर्ड 2-3 दफा यूज हुआ, सोशल डेमोक्रेसी, ये जो आज का जिस दौर, जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान में चीज ज्यादा है, साउथ एशिया हो, या वहां सोशल डेमोक्रेसी की जरूरत। सब सोशल डेमोक्रेसी यानी जो एलीट ने अपने पास इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इन चीजों में अपनी डोमिनेंस रखी हुई है, इसका नीचे बेहतर तरीके से ट्रिकल डाउन हो, इसको हम एक
एक लूज मैं डेफिनेशन में लूज टर्म में बात करूं तो सोशल डेमोक्रेसी, इसका हल उसी सोशल डेमोक्रेसी में आता है। तो पाकिस्तान में भी जिस तरह जरूरत अभी यही कि रिसोर्सेज की तकसीम की, फ्यूडलिज्म को खत्म करने की, और जहां तक ये एजुकेशन की बात की, हमारे इधर साथियों ने एजुकेशन पर जाहिर बात है अम्बेडकर साहब का बहुत ज्यादा जोर था, लेकिन एजुकेशन के हवाले से भी एक पॉइंट जो है वो ज़हन में रहे कि आज के दौर में एजुकेशन भी क्या नहीं आप समझते कि ये एक तरह का टूल होती है रूलिंग एलीट के हाथ में, यानी रूलिंग एलीट के हाथ में टूल होती है कि किस तरह का एजुकेशन जो है वो देना है। अभी एक हमारे ऑनरेबल पार्टिसिपेंट ने जिक्र भी किया कि जिस तरह अम्बेडकर साहब के बारे में बताया तो जाता है, लेकिन उनकी एनिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में नहीं बताया जाता, यह भी जिक्र हुआ। अब ये चीज जो है ना, ये देखें, ये एज अ टूल जो है वो यूज करना, सिलेक्टिव, यानी कि क्या चीज जो है वो पढ़ानी है और क्या चीज जो है वो नहीं पढ़ानी, तो ये चीज भी जो है वो ज़हन में रखना जरूरी है। दुनिया की हर रूलिंग एलीट, दुनिया की, इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड भी है, इसमें साउथ एशिया भी है, वो रूलिंग एलीट हमेशा जिस आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहती है, जो आइडियोलॉजी उसके जरिए बात इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करी होती है, वो एजुकेशन को भी उस तरह का टूल बनाते हैं। वो एजुकेशन को भी उस तरह का टूल बनाकर, और फिर जो अगली जनरेशन हमने किस तरह की तैयार करनी है, उनकी थॉट्स क्या हो, उनके थॉट में क्या बातें हो, सिलेक्टिव अप्रोच हो। बड़ी अच्छी मिसाल दी कि अम्बेडकर साहब के बारे में तो बताते हैं, लेकिन एनिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में नहीं बताएंगे कि उसके अंदर जो है वो क्या लिखा है। तो ये चीज भी जो है वो ज़हन में रहे कि एजुकेशन भी जो है वो आज के दौर में काफी हद तक जो है वो एक तरह का अलिटरस टूल है। इसके लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स, सोसाइटीज के लेवल पर एफर्ट हो सकती है, कम्युनिटी लेवल पर एफर्ट हो सकती है कि एजुकेशन से मुराद भी हो कि सही मायनों में फिर एजुकेशन की जो बात है, जो सोच को जन्म दे, जो क्वेश्चन करने की बात की गई कि क्वेश्चन रेज करने की आपके अंदर एक करेज को पैदा करे, चीजों के अंदर डाउट पैदा करे कि ऐसे है, ऐसा क्यों नहीं है, मुझे तो ये बताया गया है ऐसे। ये वाली एजुकेशन जो है वो भी, तो एजुकेशन भी, जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन भी आज कहीं ना कहीं टूल के तौर पर यूज हो रहा है। आप मिसाल ले लें, जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी आती है, पाकिस्तान हो, इंडिया में हो, वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, जो आइडियोलॉजी उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बचा रही होती है, उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए वो सिलेबस को चेंज करते हैं, एजुकेशन के अंदर मुदाखलत करते हैं कि ये हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ये हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, ये किताबें पढ़ानी चाहिए, ऐसी किताबें नहीं पढ़ानी चाहिए। किस शख्स को, किस बड़े, अम्बेडकर साहब भी इसकी मिसाल है, किस आदमी की किन राइटिंग्स को यूज करना है और किन राइटिंग्स को कोर्स का हिस्सा ही नहीं बनने देना। तो ये भी जो है ना ट्रिक एलीट क्लास की, एजुकेशन के नाम पर समझना बहुत जरूरी है। मैं सब कॉन्टेंट में कई ऐसे एजुकेटेड लोग हैं, कहने को वो पोस्ट डॉक्टरेट है, डॉक्टरेट पीएचडी से बढ़कर उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पर, लेकिन वो आप अपने आप को कहेंगे भी सही कि हम अम्बेडकर साहब को जानते हैं, लेकिन वही बात है कि वो भी सिलेक्टिव होंगे। क्या पता कि उनमें से कई लोगों ने एनिलेशन ऑफ कास्ट की स्पिरिट को ना समझाओ, या आज जो सब कॉन्टिनेंट की सूरत हाल है, तो उसमें जो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब थी अम्बेडकर साहब की, उसकी स्पिरिट को ना समझाओ। तो ये एजुकेशन भी जो है ना, ये भी बड़ा एक ट्रिकी होता है कि रूलिंग एलीट, रूलिंग टूल इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। थैंक यू सो मच सर। आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगी तमाम जो हमारे स्पीकर्स हैं कि अगर 1 मिनट मैसेज हमें आज का दे दी जो हमारे लिए टेक अवे भी हो, क्योंकि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया हुआ है। सो व्हाट इज द मैसेज, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो था वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस के हवाले से था अम्बेडकर साहब के, तो अगर 1 मिनट मैसेज मिल जाए जो कंक्लूडिंग एक तरह से हो, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर हेमंगी कदलक। मुझे तो हमेशा यही लगता है, जैसे मैं कभी भी जाती हूँ बात करने के लिए एज स्पीकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इम्प्लीमेंटेशन को भी हमने थोड़ा सा देखना चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन करें, कैसे करें, एक साथ होके हम काम कैसे करें, कौन से मुद्दे लेके हम आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत ख्वाहिश है पहले से कि एटलीस्ट साउथ एशिया लेवल पे हमने काम करना शुरू चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो कल्चरल्स है, जो बहुत सारे एक्टिविटीज है, बिहेवियर है, इवन लैंग्वेज भी है, बहुत सारा सिमिलर है। तो जैसे मैं सफाई कर्मचारी के विषय पे बहुत सालों से काम कर रही, लिख रही हूँ, मेरा पीएचडी एमफिल उसी के विषय पे हुआ था। तो अभी जो मैं एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ, तो एक ILO, WHO और वहाँ पे फिर
US, UK, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के भी बहुत सारे जो सफाई कर्मचारी के विषय पे काम करते हैं, पाकिस्तान से भी है, श्रीलंका से भी है, बांग्लादेश से भी है, सब जगह पे है। तो अच्छा लग रहा है कि हम एक कोलैबोरेटिव काम कर रहे हैं और कहीं विजन लेके काम कर रहे हैं कि ये कहीं पे खत्म होना चाहिए, कास्ट बेस्ड जो ऑक्यूपेशन है वो खत्म होना चाहिए। तो अगर हम जो भी अभी हम सब इंटेलेक्चुअल आ रहे हैं, वहां पे तो सब प्रैक्टिशनर्स रहते हैं, जब एडवाइजरी कमेटी में मैं वहां पे हूँ, लेकिन यहाँ पे सब एकेडमिशियंस हैं। तो एकेडमिशियंस होके हम क्या क्या मुद्दों को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए और कौन से मुद्दे हमें फोकस में लाके काम करना चाहिए प्रैक्टिकल लेवल पे, इम्प्लीमेंट लेवल पे। तो मुझे लगता है वो अगर कुछ होगा तो मैं बहुत खुश होंगी। नहीं तो सिर्फ मुझे भाषण देना या सिर्फ बातें करना मुझे अभी लग रहा है कि मैं कम करना चाहिए, या कैसे हम आगे बढ़े। तो वो अच्छा है। Thank you so much, ma'am. Dr. Mali Devi, ma'am, what would you like to say? I would just like to say कि as an academician as well as into social work profession, there is a significant gap between Dr. Ambedkar's philosophy at global level and the kind of knowledge systems we want for our generations. So we need to write actively, we need to question actively, we need to have a critical outlook over the histories and the books which have been produced till now by the class elites. So we need to have a critical outlook towards them, and we need to work on incorporating the erased histories which the histories which have been erased from our existence. And that is why Dr. B.R. Ambedkar's philosophy should be the active part of knowledge systems all over the countries, not just in India. इंडिया के जितने नॉलेज सिस्टम्स हैं वहां पर देयर इज अ मूवमेंट करेंटली, यू विल सी दैट मूवमेंट इज रिगरसली वर्किंग ऑन इट. There are emergencies, there are incidents where you can see Dalit women coming on the forum and speaking actively about their lived experiences, and they are actively sharing and working on knowledge systems. तो वो knowledge systems जो हैं वो all over the world, they should incorporate Ambedkar's philosophy and in real life world, real life के context में. It should not be random. Thank you. Thank you so much, ma'am. And we should stop appropriation. Okay. You know, finding a resonance of it with other ideologies. We should not do that. Thank you. Thank you so much. Dr. Rajesh Kumar, sir, what would you like to Yes. say? A short message for the listeners and the viewers. Absolutely. See, I think education is the only eye-opener weapon for everybody to broaden the domain of knowledge or broaden the epistemological framework of thought, whatever it is. I think people don't read actually. So they must read, they must educate themselves, I think this is the only vehicle through which we can get all various kinds of ideals which we talk about, particularly Ambedkar's thought and philosophy also. So I think education, we must focus on education. That is my takeaway for the other people. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Sir Umar Javed, sir, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह आपने कहा स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा रीड करें। वो चीजें ना पढ़ें जो सिर्फ आपको पढ़ाना चाहते हैं, जो आपके कोर्सेज में है, जो आपको यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या एजुकेशन में आपने नंबर्स के लिए, डिग्रीज के लिए लेनी है, बल्कि वैसे ही स्टडी करें। अगर डॉक्टर अंबेडकर को मुकम्मल तौर पर पढ़ लेंगे तो आपको ना सिर्फ 1930s 40s का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा, बल्कि आज के बहुत से इश्यूज भी समझ आएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें, इश्यूज को समझें, इश्यूज पर फिर क्या लिखा गया है उस पर ज्यादा से ज्यादा रीड करें, और नैरेटिव को, जो नैरेटिव आपको पढ़ाई जाती है उससे हटकर पढ़ें। ये असल बात है एजुकेशन की। थैंक यू सो मच सर। ये स्टूडेंट्स के लिए शायद बहुत बड़ा टेक अवे है कि आउट ऑफ द सिलेबस जो हमें चीजें पढ़नी होती हैं और रियलिटी और फैक्ट्स बेस्ड जो है स्टडी जो हमें करनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। स्पेशल थैंक्स फ्रॉम Ambedkar Society for South Asia. Hope to see you all again in another webinar with the same energy level. Stay blessed. Thank you. Thank you. I'm feeling so Thank bad you. that I couldn't switch on camera because of technical glitch. I'm No so worries, sorry. no worries. It's okay. Badly wanted
to switch it on. Thank Anyway, you. thank you so much. Thank Thank you, you. everybody. Thank you, Thank you everyone. so much. Thank you. Thank Thank you. you.